We are just near to start the program. Namaste and Swadikap. Jai Hind to all. Myself is S. Sinarai. I feel proud to be Master of Ceremony today. The fund of construction of this Dharma Center was allocated by the huge donation made by Netaji Subhas Chandra Bose to benefit the Chulalongkorn University and endorse Thailand-India relations. This Dharma Center is built in 1945 as a souvenir to Netaji for donating a huge sum to the university. Now it's a time to start the program. May I bring your kind attention to stand up for Thai, followed by Indian National Anthem, please. I would like to request all of you to stand up for National Anthem, Thai, followed by Indian National Anthem. Kindly be seated. Lighting the lamp is an integral part of Indian as well as Thai culture. May I invite Sri Manavendra Singh, AP and WO, Embassy of India, and Pra-Guru Bamdev Muni, the Reverend Royal Priest of Thailand, to come to the stage and light the lamp in front of portrait of Netaji Subhas Chandra Bose, please. Thank you very much. Thanks to Pra-Guru Bamdev Muni and Mr. Manavendra Singh, Embassy of India. Now, a prayer is a start in as Indian as well as in Thai culture. May I invite Acharya Gopal Krishna ji from Arya Samaj Temple to Bangkok to come here and perform the universal prayer, please. अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना वेद मंत्रा ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव
यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्सच्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्रा जा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ ये नद्यौ रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विवानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजापते न त्वदेता न्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यईशे अस्वदिपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ सनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्तः ॐ अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुः राणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. Thank you, Acharya ji. Thank you for such a beautiful and universal prayer. And I would like to bring your kind attention that INA Balak Sena, the living person, Mr. Raj Sachdev, along with his family, arrived. Thank you. Good morning, everyone, and Jai Hind. Today we are celebrating the 129th birth anniversary of Netaji Subhas Chandra Bose at Dharma Center, Chulalongkorn University. He was the Prime Minister of the Provisional Government of India who came to Thailand in 1943. During those days, Thailand provided encouragement to the Indian independence movement. Thai Foreign Minister Major General Luang Vichit Wathakan was Netaji Subhas Chandra Bose official host in Thailand. Netaji met the Prime Minister of Thailand, Field Marshal Pibun Songkram. On 4th August 1943, the Prime Minister has supported Netaji Subhas Chandra Bose and arranged Royal Ratna Kosin Hotel on Rajtamnan Road for his stay. And permitted for the Indian National Army, INA, to stay in Thailand from 1943 to 45. Netaji Subhas Chandra Bose gave a speech to Indian community leaders at the Royal Ratna Course in
Rajdamnan Road on 27th July 1943. And to the Indian diaspora at Chulalongkorn University, this place, on 28th July 1943. Netaji Subhas Chandra Bose has land for INA training camp in Chonburi province. The Thai government has arranged Chulalongkorn Hospital in Bangkok for the treatment of the INA soldiers during those days. The Thai government had provided a radio signal to Netaji for his daily broadcast. Thai-Burma Railway was used for passage of INA soldiers to India through Burma. Before Netaji Subhas Chandra Bose left Thailand in 1945, for his love and affection friendship towards Thailand and its people is that he has donated 500,000 baht those days to Chulalongkorn University and Hospital. I came to know that Dharma Center has been constructed and the souvenir for Netaji Subhas Chandra Bose by Chulalongkorn University. Netaji, there are many firms in Thailand those days. M.R. Amarnath, G.S. Phula Singh, M.R. Muscatis, Bhur Singh Inder Singh, and many more have joined Netaji to free India. I want to mention that Baidnath Tiwari ji donated a land to Netaji for the INA training camp in Chonburi province. My father told me that whenever he goes to meet Netaji in the early morning or evening, he sees Netaji most of the time sitting on a chair and writing something. He hardly sleeps. When the war was over, India is free in 1947. Most of Indians those days returned to India. Who was residing in Thailand then are continuing his business in Thailand. His Holiness Sadguru Pratap Singh Ji, spiritual head of Namdari Sikh, came to Thailand in 1948 and asked my father about Netaji, interact with all Indians communities in Thailand. My father explains everything about what happened in Thailand. His Holiness said to my father that the blessed soul like Subhas Chandra Bose was amongst those souls who were shot dead by the cannons in a village called Malerkotla in Punjab, in India, during the British Empire on 17th January 1872, and who gave a promise, a word, that I will reborn again to free India. Above are the brief history of Netaji Subhas Chandra Bose in Thailand. There are many more, but due to a limited time, I thank Dharma Center Chulalongkorn University for allowing us to celebrate our hero birthday celebrations. I thank all of you for being here with us on this auspicious occasion. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you, President Dharam Singh Sri Chawla ji, for such, such informative and so many unknown stories of Netaji Subhas with Netaji Subhas Vision. Now, may I request Sri Manavendra Singh, AP NWO, Embassy of India, to come to the podium on his inaugural speech, please. Good morning, everyone.
It is an honor to be present here today as we gather to commemorate the 129th birth anniversary of Netaji Subhas Chandra Bose, one of the most eminent leaders of India's freedom movement. Born on 23rd January 1897, Netaji Subhas Chandra Bose was a visionary leader whose courage, discipline, and leadership continue to inspire generations. His life exemplified unwavering commitment, sacrifice, and service to the nation. Netaji Subhas Chandra Bose remains a timeless symbol of determination, resilience, and national pride. He had a significant association with Thailand, and the Dharma Center of Chulalongkorn University stand as a testament to this enduring connection. As we remember Netaji Subhas Chandra Bose today, let us refrain our collective commitment to the value he championed for the greater good of the society. I extend my sincere congratulations to Dharma Center of Chulalongkorn University, Netaji Subhas Vision, and everyone present here for this significant commemorative event. And I also express my deep appreciation to the Dharma Center and Netaji Subhas Vision Thailand for gracious invitation. Thank you. Thank you very much, sir, for such a wonderful speech on Netaji. Now, may I invite our chief guest today, Fra Guru Vamdev Muni, the Brahmin priest attached to Royal Court of Thailand, to come to the stage and give your valuable speech. Mr. Vamdev Muni completed his schooling and his degree in marine engineering from Tamil Nadu. He had studied Vedas and Upanishad from Kanchi Sankaracharya Mutt in Tamil Nadu under the guidance of Puja Sankaracharya Jayendra Saraswati Swamiji. Vamdev Muni. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakayesu Sarvada Om Shri Mahaganapataye Namaha Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheswaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Om Shri Gurubhyo Namaha. Good morning, all the chief guests and all my brothers and sisters over here. So today we are celebrating the 129th birth anniversary of Netaji Subhas Chandra Bose at the Dharma Center, Chulalongkorn University. So the following what I'm going to tell is like the relation between the Netaji Subhas Chandra Bose and Thailand. Just brief. Netaji Subhas Chandra Bose was the Prime Minister of the Provisional Government of India, Azad Hind. He came to Thailand in 1943, and Thailand provided encouragement and support to the Indian independence movement. Netaji Subhas Chandra Bose met the Thai Prime Minister of Thailand, Field Marshal Plak Pibun Songkham, on 4th August 1943. The Thai Prime Minister supported Netaji by arranging accommodation for him at the Royal Ratanakosin Hotel and by permitting the Indian National Army, INA, to be stationed in Thailand for 2 years until 1945. During his stay, Netaji Subhas Chandra Bose delivered a speech to Indian community leaders at the Royal Ratanakosin Hotel and also addressed the Indian diaspora at Chulalongkorn University in July 1943. The Thai government arranged for Chulalongkorn Hospital to provide medical treatment for INA soldiers during those 2 years and also facilitated daily radio broadcasts for Netaji Subhas Chandra Bose. Before leaving Thailand in 1945, as a mark of his love, affection, and deep friendship toward Thailand and the Thai people, Netaji Subhas Chandra Bose donated 500,000 baht to the Thai government to be used for Chulalongkorn University and Chulalongkorn Hospital. This Dharma Center has been constructed by Chulalongkorn University as a memorial to Netaji Subhas Chandra Bose in recognition of his historic association with Thailand and his enduring legacy.
And I just come to know that this Dharma Center also built by the donation from Netaji Subhas Chandra Bose. Now, to me, I studied in India like from I was 13 years old. So I came to know about Netaji Subhas Chandra Bose at that time, and he has been one of my idols in how a patriotic person should be, how to love our own country. To me, he is the symbol of courage, sacrifice, patriotism, and uncompromising nationalism. So today I am asked to give you like blessing. So with his vision, today what his vision should be applied to everyone in the world. One is how a person should sacrifice themselves for their own nation. I'm not asking you to push other country or other nation down, but to love your country, raise your country with the goodness, with the Dharma. And when your country has Dharma, your country will be higher by moral, by economical, by the people. And your country will become very happy country, peaceful country. So this is how the whole world, the whole nation should be thinking about. This love for the country always comes with the very difficulties, like how Subhas Chandra Bose has overcome. To start the government in Thailand, I mean the Indian national government in Thailand, INA, in Thailand, it's not easy. He came here, he's not coming with all the force from Indian station and do things. He have to rise the love of Indians, whoever staying in India and out of India. To create the love for the country is very difficult. Many of the country, many of the people in all around the world, they look towards their own profit more than the sacrifice to the nation. When you have so much money, and when I ask if you have to give your time or money to the country, most of the people will deny it. So the love and sacrifice for the country today is very hard. Maybe because more peace in the country, but I see many countries and many nations are fighting for their freedom, for their way of life. But whatever people do, the love with the peace within mind should be the vision that we carry on from Netaji Subhas Chandra Bose toward our next generations and coming next generation. So let them know how India becomes freedom, how India has fought, how India has fight, how people has raised the love over from the time till today and so on. So I ask Lord Ganesha, Lord Shiva, Lord Brahma, Lord Vishnu, and all the deities that you all believe in, to give you all the blessing of good health and your prosperity with a very peaceful in mind, and let you overcome all the obstacles with your knowledge and your peace. So let everybody have a very peaceful life. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Asatoma Satkamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityoma Amritam Kamaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Thank you. Thank you very much, Praguru Bamdev Muni. And now, may I request respected Achan Paul Narulaji to come forward and give his valuable speech. And may I request Achan Wonthep to deliver his speech in Thai, please, as we have Thai audience and we like to let aware the Thais on Netaji's, please.
กราบเรียนพระครูวามาเดวามูนี respected Shri Mavendra Singh organizing host guests of honor my dear friends my role is to speak in Thai for a better understanding of our Thai guest who Netaji is บทบาทของผมวันนี้คือให้พูดเป็นภาษาไทยแขกคนไทยที่มาร่วมงานวันนี้ที่ภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงจะได้เข้าใจเนตายีคนไทยทุกคนรวมทั้งประชากรทั่วโลกเรารู้จักมหาตมะคันธีดีในประเทศไทยมีอนุสาวรีย์ของท่านเนี่ยเท่าที่ผมจะยกตัวอย่างได้ก็อย่างน้อย2 แห่งมหาวิทยาลัยรังสิตใจกลางมหาวิทยาลัยเลยมีอนุสาวรีย์มหาตมะคันธีต่างจังหวัดก็มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นใจกลางมหาวิทยาลัยมีอนุสาวรีย์มหาตมะคันธีได้รับการเชิดชูยกย่องจากทั่วโลกผู้นำหลายประเทศเอาท่านเป็นแบบอย่างท่านต่อสู้เพื่ออิสรภาพของอินเดียแบบอหิงสาแบบเราเรียกว่า non violence อหิงสาท่านเนตายีสุบาชจันทรโบสในขณะนั้นก็ยังหนุ่มๆครับท่านก็ร่วมทีมกับมหาตมะคันธีแต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านเนตายีสุบาชจันทรโบสก็มองว่าไม่ได้ผลสักทีไม่สามารถที่จะเอาอังกฤษออกได้ท่านก็เลยพูดกับท่านมหาตมะคันธีว่าขอเดินอีกแนวทางหนึ่งจะต้องขอใช้กำลังในการต่อสู้มีประโยคหนึ่งที่พวกเรารู้จักกันดีที่ท่านพูดนะเป็นอมตะ Give me your blood I will give you the freedom เอาเลือดเนื้อมาให้ผมแล้วเดี๋ยวผมจะเอาอิสรภาพให้กับอินเดียอันนี้เป็นคำพูดอมตะก็ในที่สุดเนี่ยอินเดียได้รับเอกราชคู่ขนานครับ2 แนวทางคู่ขนานทางหนึ่งก็คือจากการต่อสู้ของมหาตมะคันธีอีกทางหนึ่งก็คือการต่อสู้ของเนตายีสุบาชจันทรโบสอังกฤษเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์อินเดียครับตอนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2และกำลังจะออกจากอินเดียแทบจะไม่เขียนถึงเนตายีสุบาชจันทรโบสเลยจะเขียนถึงมหาตมะคันธีเป็นหลักเพราะว่ามหาตมะคันธีต่อสู้ด้วยเสรีด้วยอหิงสาแต่ว่าสุบาชจันทรโบสใช้กำลังอังกฤษจึงไม่ต้องการเขียนถึงแม้แต่ในอินเดียเองเด็กๆเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยก็รู้จักเนตายีน้อยมากแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นครับเป็นโลกของสื่อโซเชียลครับเราสามารถที่จะปรับตัวประวัติศาสตร์ให้ตรงกับความเป็นจริงได้นี่คือที่มาของการเกิดงานวันนี้ครับแล้วทำนองเดียวกันงานทั่วโลกครับเราต้องการเชิดชูเนตายีสุบาชจันทรโบสทุกวันนี้อินเดียและทั่วโลกยอมรับว่าอินเดียได้อิสรภาพจาก2 แนวทางครับการต่อสู้ของมหาตมะคันธีขณะเดียวกันการต่อสู้ของเนตายีสุบาชจันทรโบสโดยเฉพาะเกี่ยวกับประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่าประเทศไหนๆในโลกท่านสุบาชจันทรโบสได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกของอินเดียนะครับเราเรียกว่าเป็นนายกพลัดถิ่นไม่ได้เป็นนายกที่เป็นทางการนายกที่เป็นทางการคือจาวาฮาร์ลาลเนรูแต่ว่าสุบาชจันทรโบสได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกพลัดถิ่นแล้วก็โดนหมายหัวครับอังกฤษจะเก็บครับก็เลยมาประเทศไทยให้การต้อนรับเหมือนเป็นผู้นำประเทศถึงแม้เป็นนายกพลัดถิ่นท่านมีโอกาสเข้าพบจอมพลแปลกพิบูลสงครามจอมพลแปลกพิบูลสงครามให้ท่านตั้งการฝึกทหารอยู่ที่ชลบุรีผู้ที่บริจาคที่ดินให้ท่านเนี่ยลูกหลานท่านก็มาร่วมงานวันนี้ครับแล้วท่านจอมพลแปลกพิบูลสงครามเปิดห้องโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ที่ลาดดำเนินให้ท่านใช้ฟรีเป็นเวลา1 ปีที่ท่านมาอยู่ประเทศไทย
นี่คือความร่วมมือระหว่างไทยกับอินเดียแล้วในยุคนั้นซึ่งไม่มีใครรู้เรื่องครับคนไทยเราไม่รู้ประวัติศาสตร์นี้เลยครับนี่คือที่มาของการจัดงานนี้ขึ้นมาเราต้องการให้คนไทยได้รู้จักเนตายีสุบาช ชันดรโบสและบทบาทของเนตายีสุบาช ชันดรโบสในการต่อสู้เพื่อเอกราชมีทหารบาดเจ็บครับที่มาอยู่ประเทศไทยที่มาฝึกทหารแล้วมีทหารที่บาดเจ็บทางรัฐบาลไทยก็ให้ความกรุณาครับบอกว่าทหารเข้ารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาทั้งหมดนี่คือที่มาของธรรมสถานครับแล้วในทางกลับในการตอบแทนท่านเนตายีบริจาคเงินในยุคนู้นนะฮะในยุคนู้นประมาณ80 ปีที่แล้วเป็นเงิน500,000 บาทให้กับจุฬาครับเงินครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เข้ามหาวิทยาลัยเงินอีกครึ่งหนึ่งเข้าโรงพยาบาลจุฬาครับนี่เป็นที่มาของการสร้างธรรมสถานแล้วท่านเคยบรรยายที่นี่ครับธรรมสถานตอนยังเป็นอาคารเดิมอยู่แล้วท่านเคยบรรยายที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ครับก็นี่แหละครับความยิ่งใหญ่ของประเทศอินเดียทั้งมหาตมะคานธีและสุบาช ชันดรโบสทำให้อินเดียได้รับเอกราชแล้วกำลังเติบใหญ่เติบโตกลับมาเป็นมหาอำนาจซึ่งประเทศอินเดียเคยเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มา 1,800 ปีก่อนที่อังกฤษจะเข้ามาครับขอพวกเราร่วมกันชัยโยครับชัยโยภาษาอินเดียเราจะเรียกว่าแยหินแยหินภาษาไทยเราเรียกว่าชัยโยแยหินChayo, Jai Hind. Thank you, Achan Panthe, for delivering your speech in Thai. As we have plenty of Thai audience and Thais, they should know who was Netaji and what kind of contribution he has, not only towards India and in this peninsula. So, thank you very much. Now, may I invite Achan Vallabh Kritya Navej, the academician and scholar, a good friend of first director of Chulalongkorn University, Professor Emeritus Dr. Rawadi Favilai. Please. Achan Vallabh, you can deliver your speech in English, please. Thank you. Bilingual, Thai and English. Thank you, Achan Panthe. Thank you very much for your kindly inviting me to be a speaker here. ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณนะท่านอาจารย์พรเทพเป็นอย่างสูงนะที่กรุณาให้เกียรติผมมาพูดคุยกับเพื่อนพี่น้องชาวอินเดียและชาวไทยในวันนี้นะครับนะฮะความจริงแล้วนะฮะผมเรียนอยู่ที่นี่นะครับผมเรียนอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬานะครับแล้วผมรู้การก่อตั้งธรรมสถานที่นี่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วจุดเริ่มต้นนะครับมันมาตั้งแต่ประมาณ2514-15นะครับโดยบุคคลที่สำคัญที่สุดในการก่อตั้งธรรมสถานเนี่ยคือท่านศาสตราจารย์ดร.ระวีภาวิไลนะครับแล้วบุคคลที่สำคัญที่สุดนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านอยู่ที่อินเดียท่านนั้นก็คือท่านนาเตจีสุภาสนะครับจันทรโพสนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็น national hero ของอินเดียนะครับอันนี้นะครับเงินผมเนี่ยครับอาจารย์พรเทพรู้ดีนะครับว่าผมชอบอินเดียผมเดินทางอินเดียนะครับเหนือจดใต้นะครับผมลองนับดูนะครับประมาณ30 กว่าเมืองที่ผมไปท่องอินเดียมาแล้วก็อยากจะไปอีกนะครับอยากจะไปอีกทีนี้อาจารย์บอกว่าลองพูดถึงนะครับความสัมพันธ์ของเนตาจีสุภาพจันทรโพสกับธรรมสถานแล้วก็ท่านศาสตราจารย์ดร.ระวีภาวิไลสัก 4-5 นาทีแต่เมื่อกี้ท่านบอกว่าให้ผม10 นาทีก็ต้องขอบคุณนะครับขยายเวลาให้ผมอีกนะครับทำให้ผมไม่ต้องเร่งรัดเกินไปนะครับก็กับผมขออนุญาตเป็นภาษาอังกฤษหน่อยนะครับก็
Today, we gather to commemorate the birth anniversary of one of India's greatest leaders, the national hero of India, a symbol of courage, sacrifice, and unwavering commitment to freedom. Netaji Subhas Chandra Bose นะครับเรียนนะครับท่านเอกอัครทูตอินเดียประจำประเทศไทยนะท่านพราหมณ์นะครับท่านพราหมณ์นะครับที่เป็นประธานนะการประชุมนะครับนะการเสวนานะในวันนี้นะครับเรารวมตัวกันในวันนี้นะครับเพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันเกิดนะครับหรือวันประสูติของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญการเสียสละนะครับและการอุทิศตนอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเสรีภาพของอินเดียและของมนุษยชาตินั่นคือนะครับเนตจีนะครับสุภาพจันทรโพธิ์นะครับสุภาพจันทรโพธิ์ was born on 23rd January 1897. He believed that freedom is not granted, it is earned. At a time when compromise seemed easier, he chose resistance, guided by courage and deep moral conviction. เนตจีนะครับถือกำเนิดเมื่อวันที่ 23 มกราคม คศ 1897 นะครับท่านเชื่อมั่นว่าเสรีภาพไม่ใช่สิ่งที่รอคอยหรือร้องขอแต่ต้องไม่มาด้วยความกล้าหาญด้วยความเสียสละอุทิศตนและด้วยความมุ่งมั่นอย่างไม่ย่อท้อนะครับ He gave up a secure and prestigious career to serve his nation, to serve India, and through his leadership of the Indian National Army, he inspired millions with his heroic call. อาจารย์พรเทพปริเศษ Give me blood and I will give you freedom. Give me blood and I will give you freedom. นะครับท่านเสียสละตำแหน่งหน้าที่นะครับอันมั่นคงในชีวิตเพื่ออุทิศตนรับใช้ชาตินะครับรับใช้อินเดียท่านนำกองทัพอินเดียอิสระของท่านนะและประกาศอันทรงพลังเป็นประกาศที่ก้องอยู่ในหูของประชาชนชาวอินเดียนะในขณะนั้นท่านจงให้เลือดแก่ข้าท่านพลเทพพูดเมื่อกี้นะครับนะและข้าจะให้เสรีภาพแก่ท่านนี่ครับท่านเสียสละเลือดเพื่อให้เกิดเสรีภาพนะแก่ประเทศชาติแก่ประชาชนอินเดียเพราะฉะนั้นคำกล่าวนี้นะครับได้ปลุกวิญญาณแห่งการต่อสู้ให้แก่ประชาชนชาวอินเดียอย่างกว้างขวางนะครับ Was made Netaji truly great is his vision, a nation united beyond religion and race, built on discipline, equality, and justice. These values are universal and remain relevant to the world today, to Thailand, to the Middle East, to United States, to America, to every country around the world. ความยิ่งใหญ่ของนาเตจีอยู่ที่วิสัยทัศน์อันกว้างไกลนะครับและใฝ่ฝันถึงสังคมที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกนี้ท่านเคารพความแตกต่างยืนอยู่บนหลักวินัยนะความเสมอภาคเสรีภาพความยุติธรรมซึ่งเป็นคุณค่าร่วมกันของมวลมนุษยชาตินะครับ As we remember Netaji today, let us honor him not only with words, but with action by standing for freedom, integrity, and responsibility in our own life, in our daily life. ในโอกาสนี้นะครับขอให้การรำลึกถึงเนตาจีนะครับ National Hero ของอินเดียนะครับเป็นมากกว่าพิธีการแต่เป็นแรงบันดาลใจให้เรา
ได้ยืนหยัดในความถูกต้องรับผิดชอบต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อมวลมนุษยชาตินะครับนะเพื่อให้โลกได้อยู่นะครับอย่างสงบสุขนะครับปราศจากอธรรมที่ทำร้ายผู้คนทำร้ายเศรษฐกิจทำร้ายสังคมทำร้ายธรรมชาติทำร้ายสิ่งแวดล้อมนะครับNetaji Subhas Chandra Bose remains a timeless inspiration not only for India but for all who cherish freedom and human dignity. He is the one who donated this Dharma to Chulalongkorn University, which I also one of the students of this great university. Netaji Subhas Chandra Bose คือแรงบันดาลใจอันเป็นอมตะนะครับของผู้รักเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เพียงอินเดียเท่านั้นแต่ทั่วโลกน่าเสียดายจริงๆที่ท่านอายุไม่มากนะในท่ามกลางนะครับความต้องการบุคคลที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ในอินเดียเรามีคนยิ่งใหญ่เยอะแยะไปหมดในอินเดียนะครับผมชอบศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ในอินเดียท่านเอ่ยถึงมหาธรรมคันธีนะครับผมชอบนะอีกเยอะแยะไปหมดเลยเช่นเจวาราลเนรูนะเช่นดร.อัมเบดกานะครับเช่นราธกฤษณันนะครับเช่นนะI am Ballop in India I call it Vallabhacharya my name is Ballop but when I go to India let's call me Achan Vallabhacharya so I always study Indian philosophy thank you sir thank you I study Indian philosophy I study Buddhism I study Hinduism I go to several places sacred place in India not only in Buddhist sites but also Hindu sites Amritsar yes Amritsar I was invited by Amritsar leader to pass the queue because it's a Vesak day so there are so many people but when the leader saw me oh you are from abroad yes Thailand sir oh come so I can penetrate the big group of people to go to pay respect to Guru Nanak Guru Nanak Ji Guru Gobind Singh Guru Bin Tek Habeder so many guru and I always respect Subhas Chandra Bose now let's me talk a bit about the creation of this ธรรมสถานนะครับธรรมสถานแห่งนี้นะครับริเริ่มบุกเบิกโดยศาสตราจารย์ดร.ระวีภาวิไลดร.ระวีภาวิไลนะครับเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดทางด้านดาราศาสตร์ของประเทศไทยก็เป็นแอสโทรเมอร์แต่เป็นผู้ที่สนใจพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งท่านแปลหนังสือเนี่ยหลายเล่มนะครับที่เป็นปรัชญาเป็นปรัชญาเช่นคีตนะครับคีตัญชลีนะครับเป็นต้นท่านเขียนหนังสือเกี่ยวกับดาราศาสตร์เนี่ยมากมายนะครับท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยสมัยเมื่อประมาณสัก2514-15นะครับท่านระดมธรรมทั้งคณะระดมธรรมนะครับที่สวนลุมพินีนะครับก็มีผู้นำศาสนาเข้ามาประชุมหารือกันนะครับผมเองเป็นหนึ่งยังเป็นเด็กอยู่เลยครับยังเป็นเด็กๆยังเป็นนิสิตอยู่นะครับตอนนี้เริ่มเป็นผู้อาวุโสแล้วครับเพราะว่า72 ปี72 years old now I am a friend of long year friend with อาจารย์
พรเทพสนุละนะครับ ผมขออนุญาตนะครับถึงธรรมสถานแห่งนี้นะครับธรรมสถานแห่งนี้นะครับริเริ่มและจัดตั้งโดยฝ่ายบริหารจุฬาเพื่อให้เป็นหน่วยงานที่เป็นรูปธรรมในการภารกิจทำบำรุงศาสนาตลอดจนมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กิจกรรมทางศาสนาของมหาลัยนะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่พุทธเท่านั้นนะครับที่นี่มีฟรีดัมตามอุดมการณ์ตามอุดมการณ์ของธรรมสถานของท่านจันทรโพธิ์นะครับเพราะว่าไม่จำกัดพุทธฮินดูคริสต์อิสลามทุกศาสนามาทำกิจกรรมที่แห่งนี้ได้หมดนะครับทั้งนี้นะครับอันนี้ก็นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเริ่มก่อตั้งนะวางสร้างเนี่ยเมื่อปี 2518 นะแต่จริงแล้วมันเริ่มมาตั้งแต่1415-16แล้วนะครับผมอยู่ในได้มีโอกาสหารือโดยตรงกับท่านอาจารย์ดร.ระวีภายวิไลนะครับผมไปบ้านท่านนะครับหนังสือเยอะมากหนังสือจัดเป็นระเบียบที่สุดนะหนังสือศาสนาปรัชญาคือท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจศาสนาปรัชญาเป็นอย่างยิ่งนะครับหนังสือพุทธธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในโลกพุทธศาสนาเวลานี้นะครับคือของท่านปอ.ประยุตโตรู้สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านอาจารย์ระวีนี่แหละเป็นผู้ที่นิมนต์กราบเรียนท่านให้เขียนนะครับแล้วผมรู้จักท่านดีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะครับขออนุญาต2 นาทีนะครับพูดถึงดร.ระวีภาวิไล a little bit 2 minutes okay Dr. Ravi Pavilai who is the initiator of this Dhammathan. He was a prominent and respected astronomer and professor in the physics department here, Chula. I think he was a key figure in the establishment and activity of Dhamma Center here, Dhammathan. Dhammathan is now a unit that organizes religious and ethical activity for the university community. Dr. Ravi Pavilai was a prominent figure known for his work in astronomy, philosophy, and religion, and was named a national artist in literature in 2006. He is a scientist, but he was named a national artist in literature. That means he studied philosophy, religion, and culture. So the Dhamma Center here is a specific unit within Chula, established to promote tradition and knowledge of all religions. The construction of the Dhamma Center or Dhammasathan here was planned since 1975 and complete in 1979, with its first executive committee appointed that same year. It officially opened in 1980. Dr. Pavilai was lightly involved in the center establishment and operation, aligning with his interest in philosophy and religion. So thank you very much for your kind attention. Thank you. ขอบคุณมากครับอาจารย์บาลบ I know that this your speech is very inspirational and very informative, but we like to regret for concising your speech. Thank you very much for sharing such a meaningful and thoughtful towards India and India attachment. So thank you once again. And now may I request Sri Ravi Bhatia ji to come forward and give his valuable speech on INA family in Thailand. Mr. Ravi Bhatia ji is the great grandson of Sri Lal Singh Pandey, the Vice President of Indian Independence League in 1940-1945. Sir.
Good morning, everyone. So, Ajahn Vanlok, you mentioned about Dr. Ravi Pavilai. This is Ravi Bhatia. So, similar names there. And so, it's a pleasure to be here. My scope of the speech is, just to focus on the INA families. We have all heard a lot about Netaji Subhas Chandra Bose, and I could keep on talking a lot of things about him pretty much for the next 1 or 2 hours, but I'll focus, time is very limited, and all those achievements that we have heard about came about from people. There's a background to how INA came about. The people who were involved helping Netaji Subhas Chandra Bose, and some of the family members. I mean, there are a lot of people, and a lot of them have actually forgotten the history. Unfortunately, the history has not been passed on. I belong to one such family. It's very fortunate to be a member of that. I'm the great-grandson of Lal Singh Pandiji, who was the vice chairman of Thailand chapter of Indian Independence League. Now, what is Indian Independence League then? It's the precursor, in a way, to Indian National Army, INA. It was IIL that formed the INA before Netaji Subhas Chandra Bose actually came here. It was my great-grandfather, Gyani Pritam Singh ji, and there was Raj Bihari Bose ji. All of these people actually got together and formed the political background of Indian Independence League. And they were the ones who were negotiating with the Thai government, the Japanese government, pretty much all the governments in the Southeast Asia, to rid the whole region, and particularly India, to fight for the freedom of India from the British. And they also wanted to get rid of all the European colonialist powers from the region, which is why there was so much support for them in here. Because Thailand at that time, Siam, the country of Siam, was free. We were not, so I say we, I'm a Thai, I'm the 4th generation Thai, but of Indian origin, as you can see. So there is a similarity between, how many you mentioned that you were there for 13 years in India? Same here, 13 years. The difference, one minor difference, is that you went to India and you learned about Subhash Chandra Bose. I grew up in a home hearing stories of Netaji Subhash Chandra Bose. And to my surprise, when as a little child, I was sent to boarding school in India, in Lucknow, to learn Hindi, which I didn't speak at that time. I was born in a very small town in the north, a small city in the district of Prayer. And I went there and I knew all about INA and Netaji Subhash Chandra Bose. And when my friends used to ask me, where are you from and how come you don't speak Hindi? And I said, oh yeah, I'm from Thailand. And discussing my family background, that we were involved in the INA. And we were ridiculed at. What does Thailand have to do with INA? It has nothing to do with it. It's Indian National Army, not Thai National Army or something. So we just left it at that. Oh, that's strange. This is really weird. You don't even know your own history. So we left it at that, and we grew up with that. We got used to the fact that, yeah, it's 99% of India, unfortunately, would not know their own history. Fortunately, in the last 10 to 15 years, a lot of, I'll use the Hindi word, Jagriti has come about. People now start knowing that, yes, not just Mahatma Gandhi, as Ajahn Paul rightly said, that there was a parallel movement. But the parallel movement was never brought out because, the history was written by the British. Why would they want to tell that they actually lost a battle to INA? Now,
INA is that army. The INA went and raised the Indian flag in Moirang. They had reached Manipur already, but there was nothing in the newspapers. And now that brings me to a little bit, I'll give an example. I have to talk about the families. There are many people who were involved. If you could stand up, people from the INA families, I just want to, respect, applaud you who are sitting here. Please. Tiwari ji, please. So there are a lot of struggles. Uncle Raj, he is the legend, the living legend here. He is the living member of Balak Sena. And we are so proud to have you here, Uncle Raj. Now, try and understand when an army needs a lot of funds. Tan, man, dhan, three things. Tan, soldiers. Man, passion. Dhan, where does that come from? Dhan, normally armies are being funded by governments. In this case, there was no government. It was a government in exile, the provisional Indian government. But where would the funding come from? Where would the budgets coming from? It was people like us, all the families here. I can just give you an example of what I heard in our family. My great-grandfather was insistent that he had a business in the north of Thailand that jo bhi aayega, aadha Netaji ka, half just goes there in funding. Our home was actually a center for logistic support and funding support. So meaning all the funds that used to go, travel from Bangkok up to our home and then through the jungles, through Burma, because the army is all over the place. It's just not a batch of army here and that's it. They're not flying there, they're going through the jungles. They need medical support, logistic support, they need funding. Where do the funds come from then? It's all the families here. And there are many more. But a lot of people have actually forgotten that, or they are not even aware that their families were involved. There are very few of us left who actually know that the history behind that epic struggle. So our ancestors are the unsung heroes, because the history books have now started covering Netaji much more than they used to be covered. And I hope the government, through you, if you can pass on a message too, no one is looking for a medal or anything, but an acknowledgement that these struggles happen. Now, why is that important? When I'm just going to give one last example, that when my great-grandfather came here, he was a writer, a very prolific writer who used to write anti-British articles, and he was in favor of an aggressive or armed struggle, whatever you want to call. And ultimately, the British came to know that this Pandi, Lal Singh Pandi, is actually Bhatia, Lal Singh Bhatia. So they went to the house in Gujranwala, undivided India, and they went to arrest him. He escaped and came here to Thailand. And within Thailand, he was in Bangkok, Lampang, ultimately in Phra, when he settled down. Now, he started writing, and then at that time, Netaji's name started coming up in India. Netaji was 10 years younger to my great-grandfather, and he said, okay, this guy, he's the kind of guy that we need to support. So him, Raj Bihari Bose and others, they got together, and they formed Indian Independence League. And it was during that time, World War II, that they requested the Japanese government to help get Netaji to Asia. He was in Germany at that time. So that's the brief history behind it. And BBC, as we all know, is a very famous
British Broadcasting Corporation. I grew up with a different name of BBC. It was Behuda Bakwas Corporation. That's what my great-grandfather used to call it because of the misinformation. You all know that, fake news is a very common terminology these days, not in those days. In those days, British were always winning. BBC always reported that, British are winning. And unknown to a lot of people in India did not even know INA existed because it was never in the news. And it is only after, the World War II ended and all the INA people, all the ancestors, the people who were still there of INA were arrested here in Bangkok and put in jail. And INA soldiers were ultimately later on shipped to India, back to India, and the stories of INA, the struggle started reaching there. And in 1946, the Navy had a mutiny. Indian Navy had a mutiny, and a lot of this is not even it's not there in the Indian history book. So really, I wish it would be there. Stories of Captain Mohan Singh, of families, of a lot of things, because we really did win the Azadi. You said that, give me blood and I'll give you freedom, which is the correct meaning. But with your permission, I'm going to say the same words in Hindi. कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. And with that, I'll end my speech today. Jai Hind. Thank you very much, Sri Ravi Bhatia ji. Such a informative and very unfolded stories you have unfolded. Actually, if you would have given him a time, he would have speak, for a day. So many things are there. Even in my schooling, I read the headquarters was in Singapore and everything related to Singapore. So when I landed in Thailand, I also came to know that Thailand was a major player in INA. Thank you very much, sir. And now I would like to invite our Mr. Mahesh Kumarji, Sri Mahesh Kumarji. He is the General Secretary of Netaji Subhas Chandra Vision Thailand, to come forward and to speak on the topic of unsung heroes of INA in Thailand. Now, one more thing, as I would like him to address from this podium to Indian diaspora. So I would like to request you to deliver your speech in Hindi, sir. Thank you. नमस्ते टू ऑल. मेरे लिए भी हिंदी कठिन है, तो आई विल ट्राई टू मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश. तो पहले बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक, एक अनाउंसमेंट करना है, एक सूचना देना है. सूचना के बाद मैं अपना टॉपिक शुरू करेगा. हम सबको जानता है 2021-22 में भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वां जयंती का आयोजन किए थे. तो उस समय थाईलैंड में हम 3-4 लोग मिलकर के, जैसे एक राजपुरी से कपिल राय और जिमी मिश्रा, पाहुराट से सोनू दुबे, जैसे हम 3-4 लोग मिलकर के एक आयोजन सोचा था. थाईलैंड में रहने वाला आज़ाद हिंद फौज से जुड़े वाले परिवार में जाकर के उनको सम्मानित करना. तो वो कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम रहा. तो 2022 में उसका जो समापन कार्यक्रम में, उस समय में महामारी का समय थे, कोविड का समय थे, हमने एक ऑनलाइन इवेंट होस्ट किया था. वो ऑनलाइन इवेंट में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी उपस्थित रहे. तो उसके बाद हमारे बीच में एक चिंतन आ गया, केवल वो 125वां जयंती का जो 1 साल का कार्यक्रम नहीं, आगे भी
नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े वाले परिवार को लेकर के कुछ कार्य शुरू करना है। तो 2022 फरवरी में सुकुमित का रिपासो रेस्टोरेंट में हम लोग 9 लोग मिले थे। उसका नेतृत्व दिए थे आदरणीय अशोक मिश्रा जी। अशोक मिश्रा जी थे, कृष्णा पांडे जी थे, धर्म सिंह जी थे। हम लोग 9 लोग मिलकर के एक छोटा सा संस्था शुरू किया और उसका नाम रखा था नेताजी सुभाष विजन। और उसके बाद ये जो कार्यक्रम है, दिस इज द 22nd इवेंट वी आर होस्टिंग इन 4 years। इसमें 4 नेताजी हेरिटेज यात्रा भी है। तो हमारा संस्था का अलावा और 2 संस्था भी थाईलैंड में है, वो नेताजी के लिए कार्य कर रहा है। हमारे इतना व्यापक नहीं है, कम से कम साल भर में 1-2 कार्यक्रम करता है। एक है थाई भारत कल्चर लॉज, दूसरा है स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर। तो और उनका कार्यक्रम और हमारा कार्यक्रम का फ़र्क क्या है? जैसे थाई भारत कल्चर लॉज का कार्यक्रम होता है, थाई भारत कल्चर लॉज का बिल्डिंग में उनका हॉल में कार्यक्रम होता है, और वो कार्यक्रम का स्पॉन्सर हमेशा इंडियन एम्बेसी रहता है। स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर जो होता है वो इंडियन एम्बेसी का कल्चरल विंग है। और हमारा कार्यक्रम देखिए, जैसे अब हम 3 साल से हम कार्यक्रम आयोजन इस धर्मा सेंटर में कर रहा है, क्योंकि धर्मा सेंटर का वेबसाइट खुद बता रहा है दिस धर्मा सेंटर हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एज ए सोवीनियर टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो भारत का बाहर अगर कोई भी बिल्डिंग एक सरकारी संस्था ने नेताजी को ऑनर करने के बनाया है, वो ये धर्मा सेंटर है। तो हम इधर कर रहा है। ऐसे हम कार्यक्रम किया हूँ कांचनापुरी में। कांचनापुरी में हमारा कार्यक्रम हुआ था वाट युवान में। चोनपुरी में हमारा कार्यक्रम हुआ था जो नेताजी का ट्रेनिंग सेंटर थे बांसुआन में, वो ट्रेनिंग सेंटर का अंदर में किए थे हम कार्यक्रम। और हमारा गेस्ट भी हमेशा, पिछले साल आपको जानता होगा, पिछले साल जो थाईलैंड का फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर खोन डब्बरनसी हमारे कार्यक्रम में आए थे। कांचनापुरी का गवर्नर हमारा कार्यक्रम में आए थे, और चोनपुरी में चोनपुरी का मेयर आए थे। और हमारे कार्यक्रम में जो होता है ना, थाई लोग भी रहता है। तो 2024 हमारे बीच में एक चिंतन हुआ था, क्या भविष्य में हमारे लिए कोई कानूनी समस्या आ सकता हो? क्योंकि थाईलैंड का प्रशासन का दृष्टि में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज ए फॉरेन पर्सनैलिटी, और हम इस देश में काम कर रहा है, थाई समाज के बीच में काम कर रहा है। जैसे हॉल का अंदर में इंडियन एम्बेसी का जो है स्पॉन्सरशिप में हॉल का अंदर में नहीं है, हम बाहर कर रहा है थाई समाज में। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो हमने सोचे थे नेताजी सुभाष विजन थाईलैंड जो है उसको थाई गवर्नमेंट का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री और थाई गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ होम से रिकॉग्नाइज्ड होना जरूरी है। सो वी अप्लाइड फॉर द रिकॉग्नाइजेशन इन जुलाई 2024। होता है सरकार काम है, फाइल चलना लेट होता है। सो लास्ट वीक वी गॉट द गवर्नमेंट पेपर्स इन आवर हैंड। सो on behalf of the President Dharam Singh Chawlaji, I declare that now Netaji Subhas Vision Thailand is an organization fully recognized by the Ministry of Foreign Affairs, Government of Thailand, and Ministry of Home Affairs, Government of Thailand. और थाई लॉ का एक मैंडेटरी होता है, थाई लॉ का आधार पर मैंडेटरी होता है। उस मैंडेटरी लॉ का आधार पर यह संस्था का नाम आज से थोड़ा चेंजेस है। इसका ऑफिशियल नेम रहेगा समाकॉम नेताजी सुभाष विजन पथे थाई। सो दैट इज अकॉर्डिंग टू द थाई लॉ। सो वी विल बी यूजिंग दैट नेम हेंसफोर्थ। तो हमारा एक सक्सेस थे, एंड उसके लिए मुझे बहुत लोगों को धन्यवाद करना है, लेकिन फिर भी कम से कम धर्म सिंह जी और कृष्णा पांडे जी, आपका समय हमेशा जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जाना, उसका कागज़ पत्र मूव करना, और उसका धर्म सिंह जी और कृष्णा पांडे जी ने वो पूरा काम किए थे।
और Ajahn Paul Narula for all the support for getting that work done. So, अब मेरा जो टॉपिक में आ रहा हूँ, अनसंग हीरोज ऑफ थाईलैंड। जो अनसंग हीरोज ऑफ थाईलैंड का पिछले जो टॉपिक दे हमारा, पिछले जो कार्यक्रम का टॉपिक रहे, नेताजी थाईलैंड में आने से पहले ज्ञानी प्रीतम सिंह, बाबा अमर सिंह, सरदार बुड्ढा सिंह, ऐसा लोगों को बारे में। अभी इस समय में हम चिंतन करेगा नेताजी का समय का थाईलैंड में का जो कार्य देख रहा था, सरदार इशार सिंह नरूला, देन पंडित रघुनाथ शर्मा और बद्रुद्दीन कपासी, द 3 leaders of Indian Independence League during the time of Netaji Subhas Chandra Bose. देखिए 1938 में थाईलैंड में एक सत्ता परिवर्तन हुआ था। वो सत्ता परिवर्तन में फील्ड मार्शल पिबुन सोंग्रान प्रधानमंत्री बना और विचित वताकान फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बना, और ये दोनों लोग they encouraged Indian freedom movement, and especially Vichit Vatakan believed that the independence of India will make the whole Asia prosperous. तो विचित वताकान was the person, उसके लिए एकदम इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को हेल्प करना ही है, ऐसे थाई गवर्नमेंट, थाई प्रधानमंत्री को सब के बाद में एक डिसीजन करवाने वाला व्यक्ति वही थे। तो उस समय में हमारा थाईलैंड में 2 संस्था थे। एक है INC, इंडियन नेशनल काउंसिल। इंडियन नेशनल काउंसिल जो है भारत का कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्टर्स थे। उसका लीडर्स थे स्वामी सत्यानंदपुरी, पंडित रघुनाथ शर्मा, वही लोग थे। और उनके साथ में जोड़े थे बद्रुद्दीन कपासी और इशार सिंह नरूला। तो एक कांग्रेस का समर्थन वाला संस्था एक अलग से चल रहा है। दूसरा एक संस्था इधर शुरू हुए थे, वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस का लीग उस समय नेतृत्व लिए थे ज्ञानी प्रीतम सिंह, बाबा अमर सिंह वाज देयर, ज्ञानी प्रीतम सिंह उसका लीडरशिप ले लिया था। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग खास में जो शुरू किया वाला व्यक्ति कौन थे? राश बिहारी बोस थे। और राश बिहारी बोस उस समय हिंदू महासभा का जापान का अध्यक्ष रहे। और जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में जो लोग थे वो हिंदू महासभा, गदर मूवमेंट, ये सब में जुड़े वाले लोग थे, मीन्स वो कांग्रेस का जो ऑपोजिट लोग थे। लेकिन जब उस समय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया में इन्वाइट करने के समय में जापान ने एक शर्त रखा था, हम एक ही संस्था को रिकॉग्नाइज करेगा, वही संस्था का अंतर्गत आपको काम करना है। लेकिन जो डायरेक्ट रिलेशनशिप थे वो राश बिहारी बोस और जापानीज गवर्नमेंट का बीच में थे। तो राश बिहारी बोस एक जिम्मा ज्ञानी प्रीतम सिंह को दिए थे, जैसे स्वामी सत्यानंदपुरी को सबको इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का पक्ष में लेकर आने के लिए, और उसमें वो काबिल भी हो गए, ही बिकेम सक्सेसफुल। और स्वामी सत्यानंदपुरी एक्सेप्टेड टू अटेंड द प्रिलिमिनरी मीटिंग टू बी हेल्ड इन सिंगापुर। और उसी समय उनका समर्थन करने वाला दूसरा व्यक्ति थे इशार सिंह नरूला। इशार सिंह नरूला जी का कहानी एक दिलचस्प कहानी है। ही वॉज ए वेरी बिग बिजनेसमैन, थाईलैंड का सबसे धनी बिजनेसमैन में एक थे। वो हमेशा सिल्क, सूती का, रेशम का कपड़ा पहनते थे। वो थाईलैंड का जो है ना, एक बार जो है थाईलैंड का कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ में वॉलीबॉल खेलते थे। उनका वॉलीबॉल का स्मैश से एक थाईलैंड का मिलिट्री ऑफिसर का हाथ टूटा। तो वो मिलिट्री ऑफिसर इशार सिंह नरूला से पूछा, आप लोग इतना ताकतवर लोग हैं, लेकिन फिर भी आपका देश गुलाम है, आप लोग क्यों अपना देश आज़ादी करने के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ?
and he was moved by that words. वो घर में आकर के उसी दिन से उन्होंने सिल्क का कुर्ता पायजामा छोड़ करके कॉटन का कुर्ता पायजामा पहनना शुरू कर दिया और कांग्रेस में ज्वाइन कर दिया, आईएनसी में ज्वाइन कर दिया था। कांग्रेस नहीं है, भारत में बाहर आईएनसी थे। अब विषय आ गया है कि आईएनसी और इंडिपेंडेंस लीग का मर्जर का विषय चल रहा था। उसका नेतृत्व कर रहा था ज्ञानी प्रीतम सिंह। ज्ञानी प्रीतम सिंह स्वामी सत्यानंदपुरी को लेकर के सिंगापुर चला गया था। स्वामी सत्यानंदपुरी एक्सेप्टेड दैट दे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग विल आल्सो इनवाइट नेताजी सुभाष चंद्र बोस टू कम टू द साउथ ईस्ट एशिया। और नेताजी को थाईलैंड में आना था। आज का जो सबमरीन जर्नी हम जो पढ़ रहा है उसका पहले नेताजी आना था थाईलैंड में। थाईलैंड में इनके लिए होटल का रूम सब बुक किए थे। थाईलैंड में जो है सिल्पाकॉन यूनिवर्सिटी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का कॉन्फ्रेंस भी बुलाया था, लेकिन नेताजी नहीं आ पाया। तो नेताजी ने एक मैसेज भेजा था दैट ही इज रेडी टू एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड इंडियन नेशनल आर्मी। और वो मैसेज कॉन्फ्रेंस में पढ़ने वाला व्यक्ति थे इशार सिंह नरोला जी। नेताजी का मैसेज पहले दैट ही इज रेडी टू एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ आईएनए, वो मैसेज नेताजी का नाम में पढ़ने वाला व्यक्ति इशार सिंह नरोला जी थे। और पंडित रघुनाथ शर्मा जी के बारे में बोलते हैं ही वॉज द सेकेंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नेताजी के बाद। जब नेताजी पहले 26 जुलाई 1943 में डोनमुआंग एयरपोर्ट में आए थे तो नेताजी को डोनमुआंग एयरपोर्ट का अंदर जाकर के रिसीव करने वाला व्यक्ति पंडित रघुनाथ शर्मा देवनाथ दास थे। बाहर उनको समाज का तरफ रिसीव करने वाला व्यक्ति इशार सिंह नरोला जी थे। और इशार सिंह नरोला जी का एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कॉटन कपड़ा से अब वो आईएनए का वर्दी पहनना शुरू कर दिया। सो फ्रॉम सिल्क टू कॉटन एंड कॉटन टू द आर्मी यूनिफॉर्म, यही थे इशार सिंह नरोला जी। और वो भी नहीं, इशार सिंह नरोला जी उस समय 5 लाख बाट नेताजी को डोनेट कर दिया। ये हम सोचना है उस समय सोने का भाव दे 1 ग्राम को 1 बाट 30 असांग, तो 1 ग्राम सोने का भाव 1 बाट 30 असांग दे तो 5 लाख बाट नेताजी को उन्होंने डोनेट कर दिया। और उनका उम्र दे 28 ईयर्स ओल्ड। तो नेताजी आ गया, साउथ ईस्ट एशिया में आया था। उस ग्रुप में सबसे जूनियर व्यक्ति इशार सिंह नरोला थे। पंडित रघुनाथ शर्मा, बकरुद्दीन कपासी, ऐसे बड़े बड़े लोग थे उम्र में, 45, 46, 50 ईयर्स में थे। तो बट द यंगेस्ट पर्सन वॉज इशार सिंह नरोला, सो ही वॉज सिटिंग बिहाइंड। तो नेताजी ने उनको खड़ा करके बोला, इशार सिंह जी आप आगे आइए। उनको बगल में बुला करके बोला, दिस यंग सरदार विल बी द चेयरमैन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो उस ग्रुप में सबसे कम उम्र का सरदार इशार सिंह नरोला जी को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का चेयरमैन घोषणा किए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी का जो नेतृत्व लेने का पत्र भी पढ़ने वाला इशार सिंह नरोला जी थे और इंडिपेंडेंस लीग का चेयरमैन भी इशार सिंह नरोला जी बना। चौनबुरी में जो बैद्यनाथ तिवारी जी का जमीन में ट्रेनिंग कैंप शुरू करने के लिए नेताजी के साथ चौनबुरी जाने वाले व्यक्ति भी इशार सिंह नरोला थे। तो इशार सिंह नरोला वाज द की फिगर इन नेताजी's movement during those days. Pandit Raghunath Sharma, he was a more respected person. उनका हिंदू समाज, देव मंदिर, थाई भारत कल्चर लॉर्ड सब शुरू होने में सक्सेसफुल थे। वो एक सम्मानित व्यक्ति थे। लेकिन पंडित रघुनाथ शर्मा को जो है मंदिर का अंदर में धोती कुर्ता पहनेगा, मंदिर का बाहर आने के टाइम में नेताजी का यूनिफॉर्म बनेगा। और बदरुद्दीन कपासी जी का उस समय का थे, ही वॉज ए स्ट्रिक्ट कांग्रेस पर्सन। लेकिन नेताजी का जो मूवमेंट देखा
उन्होंने खुद महात्मा गांधी को थाईलैंड से चिट्ठी लिखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थाईलैंड में आ चुका हूं, और मुझे पूरा विश्वास है नेताजी का रास्ते में चलेगा तब भी भारत आज़ाद होगा, आपका राय क्या है? तो महात्मा गांधी जी ने उनको चिट्ठी रिप्लाई भेजा था, इफ यू फील दैट नेताजी's path is right, you are free to join him. उसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ज्वाइन किए थे बद्रुद्दीन कपासी। अब जो भी थाईलैंड में उस समय का जो भी मूवमेंट थे, ये तीनों लीडर्स ईशा सिंह नरूला, पंडित रघुनाथ शर्मा और बद्रुद्दीन कपासी आगे थे। तो नेताजी का मूवमेंट जो है एक अकेला व्यक्ति का मूवमेंट नहीं था, ये सब लोगों का मूवमेंट था। हजारों जो लोग थाईलैंड में उस मूवमेंट में जोड़े थे, जैसे हिंदू समाज, आर्य समाज, क्या बोलते हैं अपना गुरुद्वारा, ये सब उनको मदद किए थे। तो लीडरशिप में ये 3 लोग थे। अभी जो नेताजी को जो वार समाप्त हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था, नेताजी थाईलैंड में आए थे। पहले हमारा सब भाषण में अभी सब लोग बोले थे, पहले जब नेताजी थाईलैंड में आए थे वो रॉयल रत्ना कौंसिल में रहा, लेकिन वार के बाद जब नेताजी थाईलैंड में आए थे, उन्होंने रहना शुरू हुआ बांगकपी में एक बंगलाव में। वो बंगला थे बद्रुद्दीन कपासी जी का। तो फिर उसके बाद नेताजी थाई गवर्नमेंट के साथ में रिश्ता अच्छा नहीं हुआ, सो ही वांटेड टू मूव आउट। तो उन्होंने कुछ समय के लिए मई महीना में उन्होंने सिंगापुर में गया, अगेन अगस्त 15 को थाईलैंड में वापस आ गया। वापस आने के बाद 17 को थाईलैंड से बैंकॉक से जाने के टाइम में उनका जो द सो कॉल्ड एयर क्रैश हुआ था। तो उस समय में ये लोगों का क्या हो गया? ईशा सिंह नरूला, बद्रुद्दीन कपासी और पंडित रघुनाथ शर्मा, इनको क्या हो गया? देखिए, प्लेन क्रैश के बाद ईशा सिंह नरूला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे, उसमें चाइनीज, थाई, ब्रिटिश बहुत प्रेस पीपल थे, एंड ईशा सिंह नरूला was the person to declare that नेताजी is no more, first time। तो नेताजी साउथ ईस्ट एशिया में आने का मैसेज भी वही पढ़े थे, उनका देहांत का खबर भी दुनिया को देने वाले व्यक्ति ईशा सिंह नरूला थे। और जो वायरलेस रोड में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का हेडक्वार्टर में नेताजी का एक फोटो रखे थे, लोग उधर जाकर के श्रद्धांजलि देते थे। 3 दिन के बाद ये फोटो उधर से गायब हो गया। लोगों को आश्चर्य लगा, लोग उधर पूरा भीड़ लग गया, क्या हो गया? उस समय में ईशा सिंह नरूला जी एक गाड़ी में उधर पहुंचा, अंदर गया, पंडित रघुनाथ शर्मा जी, बद्रुद्दीन कपासी जी, ये 7-8 लोग अंदर बैठे थे। 5 मिनट के बाद बाहर आ गया। देयर वॉज ए स्माइल, ओ उसमें जो लिखा है, देयर वॉज ए स्माइल ऑन हिज फेस, नो मोर टीयर्स वेयर इन हिज फेस, देयर वॉज ए स्माइल। एक चाइनीज पत्रकार ने उनका पास जाकर के पूछा, क्या हो गया, व्हाट हैपेंड टू नेताजी? विदाउट अटरिंग ए सिंगल वर्ड उन्होंने अपना गाड़ी में बैठ करके निकल गया। तो नेताजी जो प्लेन क्रैश में मीन्स प्लेन क्रैश में नहीं थे, वो भी अपना मौन से दुनिया को सूझने देने वाला व्यक्ति ईशा सिंह नरूला था। दिस हैपेंड ऑन August 23 और 24, 1945। उसका 4 दिन के बाद इंडिया से ब्रिटिश फोर्सेस का फील्ड सिक्योरिटी ब्रांच ब्यूरो थाईलैंड में आ गया। तो हम लोग सोचे कि उसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, नहीं था। आज़ाद हिंद फौज के लोगों को अरेस्ट करने के लिए जो फोर्सेस आए थे, उसका नेतृत्व में 2 इंडियन ऑफिसर्स थे। एक थे मिस्टर डे, ए पुलिस सुपरिटेंडेंट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, अदर वाज नगीना सिंह
a police constable from, a police inspector from Punjab. और जो भी फोर्सेस आए थे उसमें भी पूरा भारतीय लोग ही थे. वो आने के पहले फर्स्ट डे द फील्ड सिक्योरिटी ब्रांच और फील्ड सिक्योरिटी ब्यूरो kept ईशा सिंह नरूला जी इन हाउस अरेस्ट. बद्रुद्दीन कपासी जी, पंडित जगन्नाथ शर्मा जी और दूसरे लोगों को अरेस्ट करके जेल में भेजा. और उसके बाद उन्होंने बोला है कि नहीं, अभी भारत इंडिपेंडेंस होने वाला हूँ, आप एक काम कर लो, आप अपना फोर्सेस गवर्नमेंट सब विड्रॉ कर दो एंड वी विल हेल्प फॉर द रिपैट्रिएशन ऑफ द INA सोल्जर्स. सो नेताजी का भाव में INA का लीडरशिप लेने वाला परमानंद जी ने वो एक्सेप्ट कर दिया कंडीशन. बोला है ठीक है, आप अपना पूरा सोल्जर्स को रिपैट्रिएट कर लीजिए, वी आर रेडी टू विड्रॉ. लेकिन वो 5 दिन के लिए था. तो 5 दिन के बाद इंक्लूडिंग ईशा सिंह नरूला जी सबको ऑफिशियली अरेस्ट कर दिया और उनको एनिमी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस का जो है क्लॉज दे करके उनको ऑफिशियली अरेस्ट कर दिया. सो दे बिकेम द एनिमी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एज पर लॉ. और उनको लेकर के जिस अवस्था में रखे थे, वो किताब में लिखा है, इट वॉज नॉट ए प्रॉपर जेल. कई एक काउ शेड जैसे स्टेबल में लेकर के गया था, बीच मिडिल में एक ओपन टॉयलेट बनाया था एंड ऑल दिस पीपल, उनको दे वर नॉट गिवन बेडशीट, तकिया कुछ नहीं दिए थे एंड दे हैड टू स्टे देयर. तो ईशा सिंह नरूला, बद्रुद्दीन कपासी और पंडित जगन्नाथ शर्मा वॉज अरेस्टेड. अरेस्ट करने का उसी दिन में क्या हो गया, पंडित जगन्नाथ शर्मा जी का घर में छापा मारा. पंडित जगन्नाथ शर्मा जी का घर में 50,000 थाई बाट रखे थे, वो आज़ाद हिंद फौज का इमरजेंसी फंड के लिए. उसको जब्त किया है. उसको भी नहीं है, केवल उनका परिवार का लोगों का कपड़ा भी लेकर के चला गया, उनका पत्नी का गहने, कपड़ा और जो है किचन का अंदर में जो भी सामान खाने के लिए रखे थे वो भी लेकर के चला गया था. सो दैट वाज अ ग्रेट ह्यूमिलिएशन फॉर दैट ग्रेट पर्सन एंड हिज फैमिली. तो फिर धीरे, जब फिर आपको जानता है भारत में रेड फोर्ट ट्रायल हुआ था, भारत सरकार भी जो INA सोल्जर्स के लिए जो है ब्रिटिशर्स को उनको रिलीज़ के लिए बात कर रहा था. स्लोली द फील्ड सिक्योरिटी ब्यूरो इधर से चला गया, उनको सब छोड़ दिए थे. बद्रुद्दीन कपासी जो जेल का कंडीशन एंड टॉर्चर का कारण उनका शरीर वीक हो गया था, उनको निमोनिया हो गया था. उसका 1 साल के बाद उनको बैंकॉक में उनका देहांत हुआ था. उनका कब्र आज भी थाईलैंड में है. तो आफ्टर दैट 4-5 महीने के बाद थाई गवर्नमेंट को मालूम हुआ है INA का लेफ्टिनेंट आशा सहाय जी पंडित जगन्नाथ शर्मा जी के घर में रहता है. और आशा सहाय जो है उधर रह करके अपना जो भारतीय समाज का बीच में फिर भी काम कर रहा था. आशा सहाय के बारे में हम लोग सब सुना है. और 1 साल पहले जो भारत का जो राज्यसभा TV में उनका इंटरव्यू आए थे, उस समय में उन्होंने क्लियरली बोला है कि आई वॉज इन बैंकॉक, मैं पंडित जगन्नाथ शर्मा जी के घर में रहते थे. तो जब पंडित जगन्नाथ शर्मा जी के घर में आशा सहाय को दोबारा मिला, आशा सहाय को अरेस्ट करके लुम्बिनी जेल में भेजा और पंडित जगन्नाथ शर्मा को फिर अरेस्ट करके बर्मा जेल में भेजा. तो पंडित जगन्नाथ शर्मा जी वॉज अरेस्टेड 3 times. उसमें वो 9 महीना रहना पड़ा. फिर सब नॉर्मल सिचुएशन हो गया. अब ईशा सिंह नरूला बहुत रेयरली चले जाते थे भारत में. पंडित जगन्नाथ शर्मा जी 90 का साल में वो वापस भारत चला गया. सो उसके बाद जब एक विषय भी मैं बोल करके मेरा ये जो है मैं समाप्त करूँगा. ईशा सिंह नरूला जी को जब देहांत हुआ था
उस समय में थाईलैंड का बैंकॉक का इंडियन एम्बेसी उनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा किए थे। उस श्रद्धांजलि सभा में उस समय का एम्बेसडर श्री पीके बैनर्जी सर ने एक खुलासा किया था। उन्होंने बोला था 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इनवाइटेड रघुनाथ शर्मा and Ishar Singh Narula back to India. And Ishar Singh Narula ji was offered a portfolio in Pandit Jawaharlal Nehru ji's government. अगर वो चले जाते तो पंडित रघुनाथ शर्मा जी उस समय का कांग्रेस का सीनियर मोस्ट लीडर में एक होते थे। ईशा सिंह नरूला जी पंडित नेहरू का मिनिस्टर में एटलीस्ट स्टेट मिनिस्टर होते थे एटलीस्ट, लेकिन वो लोग गया नहीं। बहुत लोग जो है नेताजी का मूवमेंट में साथ रहने वाला, बहुत लोग जो है भारत जाने के बाद जो है कांग्रेस के साथ में मिल गया था। कुछ लोग जो है पंजाब में, आंध्र प्रदेश में सब मिनिस्टर भी बन गए, कुछ लोग एम्बेसडर बना, कुछ लोग ब्यूरोक्रेट बना, लेकिन ये तीन लोग पंडित रघुनाथ शर्मा, बद्रुद्दीन कपासी और ईशा सिंह नरूला, वो पंडित नेहरू और कांग्रेस का जो भी ऑफर है वो स्वीकार नहीं किया था। और पीके बैनर्जी सर उस समय का जो स्पीच में उन्होंने जो पंडित क्या बोलता है जो ईशा सिंह नरूला का क्या बोले थे, पंडित नेहरू का जो दिया वाला मैसेज में जो पीके बैनर्जी सर ने उस समय में पढ़े थे, तो उसमें ईशा सिंह नरूला जी मैसेज टू जवाहरलाल नेहरू वास, My political days are over with the disappearance of Netaji Subhas Chandra Bose. अब मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के याद में थाईलैंड में जिएगा। अब पंडित रघुनाथ शर्मा जी क्या बोलते थे? नेताजी जैसे महान आदमी के साथ में उठना बैठना, उनका साथ में बैठ करके खाना खाना मेरे लिए भगवान का साक्षात मैं भगवान को मिला हूँ, बस मुझे वही चाहिए। तो ये दोनों लोग फिर वापस भारत में नहीं गया और क्या बोलते थे पंडित ईशा सिंह नरूला इवन जो है डिनाइड हिज पोस्ट इन पंडित नेहरू's कैबिनेट। ऐसे महान लोग थे जो नेताजी का मूवमेंट में अंत तक उनका लाइफ लॉन्ग नेताजी को आदर्श के साथ में रहने वाला तीन लीडर थे, वो भी थाईलैंड से, पंडित रघुनाथ शर्मा, ईशा सिंह नरूला एंड बद्रुद्दीन कपासी। तो यही विषय मैं आप लोगों के सामने मैं रखना चाहते थे। आज नेताजी का जयंती के साथ हम नेताजी को श्रद्धांजलि देने के साथ में हमारा कर्तव्य बनता है नेताजी के साथ में जो लोग उसका लीडरशिप में रहे, आज़ाद हिंद फौज में रहे, सब लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो इधर एक दो लोगों को मैं परिचित करना चाहता हूँ। जैसे चंद्रशेखर दुबे जी है, वो जो मोइरांग में जो नेताजी ने नेशनल फ्लैग होइस्ट किए थे, उधर रास्ता दिखाकर जाने वाला जो आईएनए का गोरिल्ला विंग थे, वो गोरिल्ला विंग में हरिप्रसाद 12 लोग थे, उसमें एक थे हरिप्रसाद दुबे जी। वो हरिप्रसाद दुबे जी का ग्रैंडसन चंद्रशेखर दुबे जी इधर है। सोनू दुबे जी है, सोनू दुबे जी ऐसे लीडर्स नहीं है ये लोग। जैसे सोनू दुबे जी का ग्रैंडफादर वॉज जैसे एक मेल डिलीवरी पर्सन फॉर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जहाँ चिट्ठी चिट्ठी पहुँचाना है। तो सोनू भी आज इस कार्यक्रम में आया है। तो और एक सूचना भी है जो 19th of January श्री बद्रुद्दीन कपासी जी का जो है ना मीन्स डेथ एनिवर्सरी का दिन है 19th January। So today we are organizing this program on 17th January. So नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इस जयंती में नेताजी के साथ नेताजी का जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग मूवमेंट को सपोर्ट देने वाला और आज़ाद हिंद फौज का सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद। Sri Mahesh Kumar ji, thank you very much for delivering such a speech
This kind of speech actually, we don't know. We only know Netaji was in Thailand, but so many unfold, so many stories, so many practical things related, and he's the one, the secretary of our association, to go to several places and find it out and line it up and present in front of us. Thank you very much, sir. And now I would like to say something. You see, Netaji Subhas Chandra Bose was greatly inspired by the Japanese. With white supremacy, no one was dared to speak against the white supremacy. And it was the Japanese first defeated Russia, and they said, and they proved that, yes, we can do. May I bring your kind attention, there is a Japanese gentleman, our guest, invited by Acharya Ponthep Sri Narulaji, Mr. Taishuke Miyamoto. Could you stand up and say so? As he heard that it is related to Netaji, he couldn't stop himself to coming here. Thank you very much. And I would like to, I should have mentioned it earlier, among our guests, respected Mr. Nitin Tripathi ji, the director of AIT, Asian Institute of Technology, is present here. Thank you very much, sir, for coming to us. And we have also another gentleman, he is from Africa, Namibia. Pele, could you stand up? As he heard that there is a program of Netaji, he couldn't restrict himself to come here. So you see so much love from Netaji. It's not only, Netaji just showed not only India and this peninsula and Africa, and inspired so many other countries. Yes, we can do. We can stand up against the white. We can stand up against the imperialism. We can stand up against the colonialism. Thank you very much. And may I invite Mr. Raju Chandji to come and give his speech on Netaji Subhas Chandra. Mr. Raju Chandji is a remarkable and reputed person among Indian communities here. Sir, please come and. जय हिंद, जय थाई। आप सभी लोगों के बीच में अभी तक बहुत लोगों ने आपके बीच में नेताजी के बारे में जो भी चीज़ रखे हैं, इसके लिए उन सारे लोगों को दिल से धन्यवाद। प्रवासी भारतीय होने के नाते और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के बच्चे के रूप में आप सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं हाथ जोड़ के। और नेताजी के बारे में बहुत कुछ न कहते हुए आप लोगों के बीच में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भारत वर्ष की धरती पे या विश्व की धरती पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जैसा व्यक्ति होना किसी के लिए आसान बात नहीं है। इसलिए कि जब भारत की धरती आज़ाद नहीं थी, उस धरती पे नेताजी के पिताजी ने उनको शिक्षा प्राप्ति के लिए लंदन में भेजे थे, जहाँ पे उस जमाने में भारत से जितने लोग आईएएस रैंक से होते थे, उनकी डिग्रियां लंदन से ही मेरे जानकारी के अनुसार मिलती थीं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जब वो डिग्रियां प्राप्त की और प्राप्त करने के बाद वो भारत की धरती पे बंगाल प्रांत में, तब के ज़माने में विक्टोरिया भवन कहा जाता था, जहाँ से अंग्रेजों ने भारत को संचालित करते थे। और वह जब डिग्री प्राप्त करके आए तो उन्हें बंगाल का गवर्नर बनाने के लिए अंग्रेजों ने ऑफर भी किया, लेकिन धन्यवाद है सदैव श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कि हम लोगों को तो मौका नहीं मिला, लेकिन हम लोगों के पूर्वजों को जरूर मौका मिला आपका सेवा करने के लिए। और उन्होंने उस डिग्री को त्याग करके भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी सारी सुख सुविधा छोड़ के हम प्रवासियों के बीच में, आप सभी के पूर्वजों के बीच में आने का उन्होंने काम किया। और इसलिए हमारे पूर्वजों को जो मौका मिला, इसके लिए नेताजी को
तहे दिल से आप सभी लोगों के तरफ से पुनः आपको बार बार बधाई देता हूं। और जहां तक नेताजी के बारे में कहने और सुनने और समझने की बात है, तो भारत के इतिहास को उठा के कोई देख ले, हमारे हर ग्रंथों के माध्यम से जो कुछ भी हमारे विद्वानों ने हम लोगों को बताया है, उसमें सिर्फ 3 लोगों की मृत्यु नहीं हुई है, जो कि आज इस विश्व के पटल पे अगर देखा जाए तो यही सत्य है। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा की मृत्यु यदि नहीं सुनिश्चित है, तो आदिकाल के रामायण के युग में हनुमान जी की मृत्यु नहीं सुनिश्चित है। आज के इस समय में हमारे नेताजी की मृत्यु नहीं सुनिश्चित है। जय हिंद, जय भारत, जय थाई। आपको अशेष धन्यवाद राजू चांद जी। आपका जो स्पीच थे यहाँ पे वो शुद्ध हिंदी में थे और इंडियन डियास्पोरा के लिए इससे ज़्यादा इंस्पायरिंग नहीं हो सकते। और आप जिस जोश से जिस भाषा का प्रयोग किया है वो काबिल तारीफ़ है। हम आपका आभारी है। Thank you very much, and I would like to we are coming to the last session. Let me remind you that this year marks the 150th anniversary of Vande Mataram. The national song of Bharat will conclude the event by singing first 2 stanzas of Vande Mataram. Before that, I invite Sri Sagar Shukla to come forward to deliver the vote of thanks. After the vote of thanks, please stand for the Vande Mataram. Sagar Shukla ji. Good morning, everyone. On behalf of Netaji Vision, I extend my heartfelt gratitude to all who have made this event meaningful and successful today. First and foremost, we express our sincere thanks to Chulalongkorn University, especially the Dharma Center, for their gracious support, warm hospitality, and for providing such a prestigious platform for this noble cause and noble gathering. We are deeply honored by the august presence and blessings of Pramuni Bamadeva, the royal priest of Thailand, whose spiritual guidance has added great sanctity and dignity to this occasion. Our sincere appreciation goes to Mr. Manvein Singh from the Embassy of India, whose kind presence has strengthened the bond of friendship and cultural harmony between India and Thailand. We also thank Dr. Nitin Tripathi for his valuable presence, encouragement, and continued support towards the initiatives that promote cultural and spiritual understanding. I would also like to thank Ajahn Ballabh. I think he's left. Yeah, but I'd like to thank Ajahn Ballabh in opening our eyes to the first director of Dharma Center. A special word of gratitude to all executive members of Netaji Vision, whose dedication, teamwork, and tireless efforts behind the scenes have made this event possible. We also extend our thanks to all invited guests, dignitaries, speakers, scholars, and participants whose presence have enriched this gathering and given it true meaning. Finally, we express our sincere appreciation to the organizing team, Achan Ponthe Sri Narula ji, Achan Pramuni Bamdev ji, Sri Chavla ji, Santri Chavla ji, and Mahesh ji for supporting the event, without whom today's program would not have been possible. Once again, thank you all being a part of this memorable and inspiring occasion. Thank you so much. You are kindly requested to stand up for Vande Mataram, please. Vande Mataram.
शीतला शस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् Thank you very much. Please be seated. And could I invite all of guests and participants to come forward and have a group photos, please. And afterwards, lunch will be served, a vegetarian lunch.